So I'll be showing you a few questions one by one. You will have 3 minutes to solve each and every question, and then we will discuss it. So remember, the time limit for each question would be 3 minutes. Okay. I hope everybody is having the access to stopwatch or anything from where you can start your time right at 3 minutes. Are we good to go? Everyone ready? Good to go? Okay, let's begin. So this is the first question. Your time starts now. Okay, now you have 1 more minute. Anyone, any cue about such question? Okay, Akhil says 2, which is not the correct answer. Vivek says 1, which is again not the correct answer. Jessica says 5. Very good, Jessica. That is the correct answer. Okay, so let us solve this question now. Now, this is a question from functions, right? Whenever we have such series or a sequence and it is a type of function, what we try to do, we try to make a pattern. हम एक पैटर्न बनाने की ट्राई करते हैं. हमारे पास S0 की वैल्यू दी है हमें 2. S0 is 2. अच्छा, what is S1? If any of you have calculated, what is the value of S1? Anyone? What is S1? If you have calculated S1, P minus 2. Very good. What is the value of S2? Very good. S2 is 3P minus 2. What is the value of S3? S3 comes out to be 2. ठीक है. इसके बाद अगर मैंने निकाला S4, S4 is again 4P plus 2. What is S5? S5 is P minus 2. S6 is 7P minus 2. S7 is 2. आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको रिजल्ट आ रहा है. अगर मैं आगे निकालता हूं S8 would be 8P plus 2. S9 would be P minus 2. S10 would be 4P minus 2. And at the end S11 is again 2. ये वैल्यूज आई है मेरे पास. ठीक है. Now I have to substitute n in such a way that
फॉर हाउ मेनी वैल्यूज p इज 397 द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी p की कितनी वैल्यूज के लिए आपके जो कोई सीरीज है ये आपको 399 आउटपुट देगी मुझे। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर जो ये सीक्वेंस है S0, S4, S8, S12, ये आपकी इस टाइप की है, 2 4p+2, इसके बाद 8p+2, इसके बाद 12p+2 आ जाएगा एंड सो ऑन। क्या इस सीरीज में कभी भी आपका 397 आना पॉसिबल है? इज इट एवर पॉसिबल? नो। व्हाई? बिकॉज इट इज एन even number. 2 is an even number, 4p is an even, plus 2 is an even. यहाँ पे हमेशा आउटपुट हमारी even आएगी हमारी, ठीक है। तो मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ कि इस सीरीज में से मुझे कभी भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी। इफ आई टॉक अबाउट द सीरीज S1, S1, S5, S9, S13, all these are of the type p-2, और p की कौन सी वैल्यू के लिए मुझे 397 आउटपुट देगा? फॉर द वैल्यू 399। तो एक सच वैल्यू आ गई मेरे पास, p की क्या एक सच वैल्यू आ गई? 399 इज वन सच वैल्यू ऑफ कूल। इफ आई टॉक अबाउट द सीरीज, इफ आई टॉक अबाउट द सीरीज S3, S7, S11, ये सारी सीरीज हमेशा क्या रह रही है? 2 रह रही है। तो ये तो वैसे ही हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, अभी तक मैंने सिर्फ एक वैल्यू निकाली, वो वैल्यू क्या है? p इज इक्वल टू 399, ये एक वैल्यू निकाली है मैंने अभी तक, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एक सीरीज रहेगी, वो सीरीज कौन सी है? S2 वाली सीरीज, S2, S6, S10, ठीक है। ये सीरीज क्या है? 3p-2, 7p-2, 4p-2 एंड सो ऑन। इसको मैंने किसके इक्वल करना है? 397 के लिए। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे मैं p की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाए? आउटपुट में 397 आ जाए। अब एक तरीका तो यार ये है कि मैं मैनुअल टेस्टिंग करता जाऊं, कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखता जाऊं और मेरा कहीं ना कहीं आंसर आए। एक तरीका तो वो है करने का। दूसरा, व्हाट इज द अदर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द अदर एफिशिएंट वे? कैन आई से, आई एम जस्ट इरेजिंग इट फॉर अ व्हाइल, कैन आई से, जो मेरे पास ये सीरीज के जनरल टर्म्स है 3p-2, 7p-2, ठीक है, 11p-2, जो ये सारी मेरे पास टर्म्स हैं, ये टर्म्स को अगर मैं इक्वल टू लेट्स से 397 लिखता हूं, तो यहाँ पे 3p इज इक्वल टू 399 आया, एक सॉल्यूशन आ गया। 7p इज इक्वल टू 399 लिखा, एक सॉल्यूशन आ गया। 11p इज इक्वल टू 399 लिखा, एक सॉल्यूशन आ गया। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस इट लाइक दिस, कहां तक जाएंगे हम ऐसे? तो क्यों ना हम ये देखें कि यार जो यहाँ पे आउटपुट में राइट हैंड साइड पर सिर्फ 399 ही आ रहा है हमेशा, और इस तरफ जो नंबर्स है वो क्या है? 3p, 7p, 11p, 15p, 19p एंड सो ऑन। क्यों ना मैं यहाँ पे अपने 399 को 3 इंटू पी है, 7 इंटू पी है, 11 इंटू पी है, 15 इंटू पी है, कुछ इस तरह से ब्रेकअप करूं कि मेरे पास इस फॉर्म में आए, 4k plus 3 into something into p. In fact, why 4k plus 3? Because 3, 7, 11, 15, 19, all these numbers are of the type 4k plus 3. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ऑल दीज आर ऑफ अ टाइप 4k plus 3। तो मैं 399 को फैक्टराइज करता हूँ। 399 को फटाफट फैक्टराइज करके देखते हैं। 1 into 399, 3 into 133, 7 into 57 एंड 19 into 21। इसके अलावा नहीं आएगा। तो मेरे पास ये आई चीजें। अब मुझे बताओ इनमें से कितने नंबर है जो 4k plus 3 टाइप के हैं? हाउ मेनी नंबर्स अमंग दीज आर ऑफ द टाइप 4k plus 3? कितने हैं फटाफट से बताओ। एक 3 है, और एक 7 है, और एक 19 है, ठीक है, और क्या आएगा आपके पास? एक 399 आएगा। 399 है, 4 नंबर ये आ गए मेरे पास, ठीक है। मेरे पास और जब 399 पी होगा तो पी की वैल्यू क्या आएगी? 1। द वैल्यू ऑफ पी वुड बी 1। मैं 4k plus 3 को 399 पुट कर रहा हूं तो पी 1 आया। तो यानी कि कितनी वैल्यूज फिजिबल आई? टोटल 5 सॉल्यूशंस आए। सो दिस वाज वन गुड क्वेश्चन ऑन फंक्शंस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज? Everyone, is it clear? Okay, let's move ahead. Okay, I am writing the next question for you. The next question is,
आपको गिवन है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर minus 1 is equal to 10. This is given to you. You have to find the value of a square plus under root of a4 minus 1 plus 1 upon a square. This is plus. A square plus under root of a power 4 minus 1. Think over it. ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने. A square a plus under root of a square minus 1 plus 1 upon a minus under root a square minus 1 is equal to 10 आपको given है. You have to find the value of a square plus under root of a power 4 minus 1 plus 1 upon a square plus under root of a power 4 minus 1. You have to calculate its value. निकालिए. Again, you have, let's say 4 minutes for this. You have 4 minutes. Start your timer. Try now. Okay, let us solve this question. Now, these are some typical kind of questions. ठीक है,
और जब भी हमें ऐसी चीजें नजर आती है ना, नीचे आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 1/a प्लस अंडर रूट बी, आप हमेशा इनको क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट थिंकिंग जो आपकी जाती है दैट इज रैशनलाइज, टू पुट दीज टू सम वैल्यूज इन सम वे कि हम रैशनलाइज करके कुछ रिजल्ट निकाल सके। लेट मी क्लियर द क्वेश्चन। हमें दिया हुआ था a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। अब अगर मैं देखूं तो ये दोनों क्या है, बेसिकली कॉन्जुगेट पेयर्स ही हैं। दीज टू आर नथिंग बट कॉन्जुगेट पेयर्स, जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की बात करूं तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को रैशनलाइज करता हूं, इफ आई रैशनलाइज दिस पार्ट, क्या मिलेगा मुझे, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू a प्लस अंडर रूट ऑफ a square minus 1, which is nothing but a square minus b square, or I can say it will overall give me a plus under root of a square minus 1. So basically what I can say, this is equal to this only. These two things are equal and there is no difference between them. These two things are perfectly equal. So if these two things are equal and it is equal to 10, can I say, मैं दोनों को यही लिख देता हूँ, a plus under root a square minus 1 plus a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, कैन आई राइट दिस? तो यहां से क्या है आपके पास, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू 5। अब हमने कहा था कि यार क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल है, दिस मीन्स 1 अपॉन a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। अब दोनों चीजें 5 है। ठीक है, अब मुझे आगे ऑपरेट करना है इस चीज के ऊपर, इस चीज के ऊपर ऑपरेट करना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइन ए 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए 4 माइनस 1। अब मुझे इस चीज पे वर्कआउट करना है। अब अगर मुझे यहाँ पे यार ये दिख रहा है कि ये दोनों कॉन्जुगेट है, ठीक है, ऊपर नीचे, कैन आई वर्क देम समहाउ एंड फाइंड द रिजल्ट? कोशिश करते हैं। व्हाट इज, जो ये 5 है, दिस व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, इसका सॉरी, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस? कैन आई से a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/5, उल्टा हो जाएगा प्रॉपर। नाउ लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2। एडिंग 1 प्लस 2, आपके पास क्या आएगा, देखो आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 ये तो कैंसिल ही हो गया, आपके पास आया 2a इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, 2a is equal to 26/5, a is equal to 13/5। ये आपके पास रिजल्ट आ गया दैट a is equal to 13/5। अब आप चाहो तो a is equal to 13/5 सीधा वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अगर आप मेहनत करने का मन कर रहा है आपका तो। अदरवाइज आप इसको दोबारा कुछ रेशनलाइज करके देखो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी भी नहीं हुआ तो जस्ट ट्राई इट आउट, आपका रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। अब लेट मी क्लियर इट। सो इफ आई फर्दर रेशनलाइज इट, आपके पास आएगा a square a4 minus 1 by a square plus root a4 minus 1 is nothing but a square a4 minus 1 plus a square minus root a4 minus 1 a4 minus a4 minus 1 which is nothing but 2a square आ गया मेरे पास। अभी 2a square क्या आ गया, 2 into 169 by 25 which is 38 by 25। This is my final result। ठीक है, तो बेसिकली मैंने डबल रैशनलाइजेशन की और फिर मेरे पास रिजल्ट आया। Is this clear everyone? Kindly reply me with, revert me with a yes or no please. Okay, let's move ahead. Try this question. Three minutes you have for this, and it is not a difficult one, just a conceptual one. Try it.
ये आप लोग सो शायद तुक्के मार रहे हो ना, गलत है ये। The answer is not 2. In fact, it is not nowhere near 2. Okay, we have to find this length. Okay, is everyone done trying? Should we solve it? Okay, we all know since it is an equilateral triangle, so अगर ये side 3 है तो ये complete side भी 3 है, ये complete side भी 3 है मेरे पास. This angle is 60. This angle is also 60 and this angle is also 60. Since this is 60 and ये P vertex से यहाँ पे आके C बनी है, so can I say this angle is also 60? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? Okay, let's move ahead. अब let's say ये जो AP है, let's say the length of AP is equal to x. अब अगर AP x है, can I say ये AP ही तो फोल्ड होके AC बनी है? AC is also x. ठीक है, let's say जो PB है length PB is y. अब जो लेंथ PB y है, यही तो BC भी बनी है, which is again y. ठीक है, AC भी 60 कैसे है यार? देखो, आपने जो ये वर्टेक्स था इसको आपने उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो जो ये एंगल है इसको आपने बेसिकली काइट की टाइप से इस वर्टेक्स को यहाँ मिला दिया, तो जो ये स्ट्रेचर है वही तो यहाँ पे आएगा ना, 60 का 60 रहेगा. ठीक है, अब सिमिलरली BC भी y. अगर ये पूरी साइड 3 थी, इफ AP इज x, so this is 3 minus x. Similarly, if complete is 3, this part is y, this part is y, this is 3 minus y, this is 1 and this is 2. Now what further to do? अब क्या कर सकते हैं हम? Can I say अगर मुझे x और y की लेंथ पता हो, if I know the length of x and y, तो मैं cos रूल लगा के, cosine रूल लगा के ये निकाल सकता हूँ. अब x और y कैसे पता लगेगा मुझे? इन ट्राइंगल AQC. ठीक है, if I talk about triangle AQC, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, इसमें आपकी AC की लेंथ क्या आएगी? हाउ विल यू राइट AC इन दैट व्हेन वी डिफाइन cos रूल? हाउ डू यू डिफाइन द लेंथ ऑफ AC? क्या लिखोगे आप? दिस x स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 minus x square a square plus b square minus 2 ab cos theta. What is cos theta here? This 60 degree. यहां से आप सॉल्व करिए, you will find the value of x as 7/5. You will find the value of x as 7/5. ठीक है, similarly
on the very similar grounds, I'll apply it on this triangle. In triangle BCR, ये ऊपर था AQC, अब है ट्राइंगल BCR. BCR में आपका y स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस y इंटू cos 60. ये सॉल्व करने पे आपके पास y की वैल्यू आएगी 7/4. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 7/4. ठीक है, अब ये साइड आपके पास है 7/5, ये साइड आपके पास है 7/4, ये एंगल है 60 डिग्री और आपको ये लेंथ निकालनी है. लेट्स से दिस लेंथ इज z. अब z की लेंथ क्या निकालोगे आप? z स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 का स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 49/20 इंटू 1/2. ठीक है, तो सोल्विंग दिस आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू 7 इंटू अंडर रूट 21/20. वैल्यू ऑफ z इज 7/21/20. क्या ये समझ आया सबको? नाउ दिस इज अ टिपिकल ज्योमेट्री ज़ैड क्वेश्चन कह सकते हो इसको आप. ठीक है, दो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे. ठीक है, अच्छे लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट ओनली कंसेप्चुअल वन. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज? Okay, okay, so we are done with the difficult part. Now quickly solve this one. This is not a difficult one and I assume that you will solve it. वेरी गुड आरजू, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड सिड. तीनों गलत हो. नाउ वन बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ना है इसको ढंग से.
वेरी गुड चंदन, आपका भी गलत है। ओके, लेट अस सॉल्व इट। लेट अस से टोटल आइटम्स इन द शॉप आर 100। टोटल 100 आइटम्स हैं, जिसमें से आपके पास एस आइटम्स हैं जो सेल्स के हैं, ये लेट से एक्स आइटम्स हैं, और जो नॉन सेल के आइटम्स हैं वो कितने होंगे, 100 माइनस एक्स, ये होंगे। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि सेल वाले आइटम्स हैं एक्स और नॉन सेल वाले आइटम्स हैं 100 माइनस एक्स। मुझे ये पता है कि उसने टोटल कितना आइटम्स के ऊपर सेल का टैक्स लगाया है, 30% के ऊपर। यानी जो टोटल उसने फाइनली सेल करे हैं, सेल वाले हैं, वो कितने हैं, 30 है। और वो 30 में दो कंपोनेंट आएंगे, कुछ सेल वाले आएंगे और कुछ नॉन सेल वाले आएंगे। अब एक एक करके पकड़ते हैं। 20% of items that are supposed to be marked with regular prices, यानी 100 minus x component का 20% are now marked for sale। यानी जो 100 minus x है इसका 20%, यानी इंटू 20/100 और 2/10, ये उसने सेल के लिए लगा दिए। अब सेल कंपोनेंट कितने, 55% of the items that are supposed to be marked as sale, यानी वो 55% आइटम जिसको कि सेल के लिए मार्क किया जाना चाहिए था, उन पे रेगुलर है। इसके 55% को उसने रेगुलर कर दिया। अगर इसके 55% को रेगुलर किया है, मतलब जो यहां पे है वो कितने हैं, सिर्फ 45% है, 0.45x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आएगी 40। सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 40, यानी कि 40 आइटम्स टोटल सेल के थे और 60 आइटम्स नॉन सेल के थे। अब 40 में से उसने यहाँ पे जो सेल के होने चाहिए थे वो कितने डाले, सिर्फ 18, और बाकी कितने डाले, 22। अब आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ आइटम्स दैट आर मार्क्ड फॉर सेल्स आर सपोज टू बी मार्क्ड विद रेगुलर प्राइसेस। अब कितने आइटम्स ऐसे हैं जो होने चाहिए, जो सेल्स के लिए मार्क्ड है लेकिन उन पे रेगुलर प्राइस होना चाहिए, वो कितने आइटम्स है, कितने हैं, 22। तो अब इसको यहाँ पे परसेंटेज निकाल के आंसर निकालो, कितना आएगा, फटाफट से आंसर दो फाइनल। टोटल 30 आइटम्स थे, 30 में से 18 आइटम, अभी भी गलत कर रहे हो। 30 आइटम सेल के टोटल डाले थे, जिसमें से 18 तो सेल्स वाले ही हैं 0.45x, तो बाकी कितने वाले हैं, 12 आइटम सेल के डाले हुए जो नॉन सेल के आने चाहिए थे। तो 12/30 इंटू 100, आपकी परसेंटेज आई 40%। खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटल 30 आइटम सेल के लिए डाले थे, जिसमें से 0.45x यानी 18 आइटम्स तो वही थे जो सेल के भी थे और सेल में आने भी चाहिए थे। यानी 30 माइनस 18 कितने आइटम्स ऐसे थे, 12 आइटम्स ऐसे थे जो नॉन सेल के थे, जो कि यहाँ पे आ गए। ठीक है, क्लियर है, तो 12 इज 40% ऑफ 30। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? सी टेल मी अ गुड बेसिक क्वेश्चन। इससे इससे बेसिक तो क्या होगा क्वेश्चन, कभी भी नहीं आ सकता इससे बेसिक क्वेश्चन तो। ठीक है, द ओनली थिंग इज प्लीज रीड द डेटा केयरफुली। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इट इज द इजिएस्ट वन, ट्राई दिस।
Try again, guys. Hemant, good. Very good, Jessica. Very good, Vivek. Very good, Arzu. So बेसिक चीज, प्रीवियस ईयर मान लो कि n बच्चे थे, तो इस बार बच्चे कितने हो गए? 1.2n हो गए आपके पास। ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉयज क्या है मेरे पास, सॉरी नंबर ऑफ किड्स क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स। लेट अस से उनकी कुछ फीस थी f, तो लास्ट ईयर कितनी फीस इकट्ठी करी हमने? बॉयज प्लस गर्ल्स इनटू f, दिस वाज द फीस दैट वाज कंप्लीट लास्ट ईयर। इस बार कितनी करनी है? इस बार बॉयज ही आपको कितनी दे रहे थे, उससे 1.25 टाइम्स दे रही है। 1.25 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी कितने हो गए हैं, 20% बढ़ गए हैं, 1.2। और बॉयज की फीस कितनी है, f, ये बढ़ गई है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। यहां से क्या आएगा आपके पास, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1.2 इज 1.5 बॉयज। तो यहाँ से आया बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो आ जाएगी आपके पास 2:1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके,